Hello friends, welcome you all in spoken English class by Seeta Mam. Now in this class friends, we will talk about some sentences which are related to our present time. Like this, if suppose in Hindi we say कि अब चाय लेने का समय हो गया है ना, अब खाना खाने का समय हो गया है, इस तरह से हम बोलते हैं, है ना। अब इंग्लिश पढ़ने का समय हो गया है, तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उस चीज़ को हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमें बोलना अब इंग्लिश पढ़ने का समय हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. What must we say? We must say it is time to learn spoken English. Okay, it is time to take a cup of coffee. It is time to sing a song. It is time to take a breakfast. It is time to meet our friends. Now it is time to start speaking English. ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब हमने बताया आपको अभी किस तरह से, जैसे अपन हिंदी में बोल रहे हैं, चलो अब अपना समय हो गया है, अब इंग्लिश सीखने का समय हो गया है, तो इस बात को हमें इंग्लिश में बोलना है. इट इज़ टाइम टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. ओके, उसी चीज़ के सेंटेंसेस आज हमने आपको बताए हैं. इट इज़ टाइम टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. इट इज़ टाइम टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी. It is time to take breakfast. It is time to take lunch. It is time to take dinner. It is time to take snacks. It is time to meet our friends. It is time to go for a walk. It is time to sing a song. It is time to spend time with our family. Okay, like this. So you have to frame such kind of sentences and practice them today. So friends, do one thing, frame 10 sentences like this and practice them speaking. Okay, speaking them today. You have to practice these sentences framing and practice them speaking in 20 seconds. Okay, 15 seconds ओवर हुए आपके, अब आपको 20 seconds के लिए प्रैक्टिस करनी है. देखते हैं आप 20 seconds में कितने sentences फ्रेम कर सकते हैं, या फिर जो सेंटेंस हमने आपको बताए हैं उन्हीं सेंटेंस को आप 20 सेकेंड्स में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो दिस मच फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न समथिंग एल्स. ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.